हेलो बच्चों। So let's read the question. The question says, which of the following statements is incorrect? First statement is bones has a very hard matrix. Second, increase in the ATP level removes the masking sites for myosin. Third, each rib in humans is bicephalic. And fourth, fibrous joints do not allow any movement. So the key concept of this question is muscles and the skeletal system. जो कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होता है और जो फंक्शनल यूनिट होता है उसे बोला जाता है सार्कोमेयर. एंड ए सार्कोमेयर इज बेसिकली द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. So a sarcomere is made up of two types of filaments. First is the actin filaments and second is the myosin filaments. The actin filaments are also known as the thin filaments because they are comparatively thin, while myosin filaments are called the thick filaments. This is basically made up of globular actins. These globular actins are the monomers जो polymerize करके F actin बनाते हैं. F actin is the filamentous actin जो polymer होता है. And two filamentous actins are helically wound upon each other to form the actin filament. फर्दर जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसमें एक और मॉलिक्यूल होता है कॉल्ड द ट्रोपोमायोसिन. Tropomyosin basically runs throughout the length of the actin filament. Also, there is another molecule called the troponin, which is distributed over the tropomyosin. Basically, जब भी किसी मसल सेल में एक्शन पोटेंशियल आता है एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक्शन पोटेंशियल के बाद जितने भी कैल्शियम आयंस होते हैं they are released into the sarcoplasm. The concentration of the calcium ions increases in the sarcoplasm, and this leads to the troponins being removed from the active site of actin filament. ट्रोपोनिन जो होता है वो बेसिकली एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट को मास्क कर रहा होता है. सो ट्रोपोनिन masks the active sites of the actin filament. जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं उनको बोला जाता है मीरोमायोसिन्स. मीरोमायोसिन से मिला के बनता है एक मायोसिन फिलामेंट. कंटेन्स a globular head with a short arm and a tail. Myosin का जो head होता है, it has two sides. First, the ATP binding site, and second, the actin binding site. The myosin head contains an actin binding site, जहाँ पे the active site of the actin binds, which results in the contraction of the muscle. Skeletal system. Skeletal system में it is made up of basically bones and cartilages. Bones and cartilages are both specialized connective tissue. However, जो bones होता है इनका matrix बहुत hard होता है. Matrix is hard. However, cartilages का जो matrix होता है वो pliable होता है. Both of which is due
टू द प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स जो बोन्स का हार्ड होता है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम salts deposition and cartilages जो pliable होते हैं या जो bendable होते हैं, they are because of the chondroitin salts. मोरोवर जो बोन्स होता है वो दो टाइप के स्केलेटन बनाता है. एक होता है एक्सियल स्केलेटन which forms the mid axis of the body, and the second is the appendicular skeleton which forms the appendages. So axial skeleton, it consists of the vertebral column, it consists of the ribs, it consists of the sternum and skull. जो स्कल होता है इसमें भी दो टाइप के बोन्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट आर दी क्रेनियल बोन्स जो हार्ड कवरिंग ऑफ द ब्रेन बनाते हैं, एंड सेकंड आर दी फेशियल बोन्स व्हिच फॉर्म्स दी फ्रंटल रीजन ऑफ द स्कल. मोरोवर जो रिब्स होते हैं, there are 12 pairs of ribs which are present in a human being, and all the ribs have two articulation surfaces on the dorsal end. Dorsal end पे they actually articulate with the vertebral column. Appendicular skeleton, on the other hand, they form the limbs, both forelimb and hind limb, as well as the girdles. लोकोमोशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक और स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड द जॉइंट्स, एंड दीज आर बेसिकली द कनेक्शंस between bones and bones or between bones and cartilages. Basically act as a fulcrum. Joints जो होते हैं they basically act as a fulcrum, help in the movement of the different body parts. And जो joints होते हैं उनको भी तीन parts में divide करा गया है: fibrous joints, cartilaginous joints and synovial joints. So coming back to the question में हमें बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सबसे पहले बोन्स हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स, दिस इज ट्रू, जो हार्डन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स. सेकंड, इंक्रीज इन द एटीपी लेवल रिमूव द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन. ये गलत है. एक्टिव साइट्स which are present in the actin filament, they are removed by the increase in the level of calcium. So this statement is wrong. Third, each rib in the human is bicephalic because इनमें दो आर्टिकुलेशन के लिए रीजन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द डोर्सल एंड. एंड फोर्थ, फाइब्रस जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट. दिस इज आल्सो राइट. जो फाइब्रस जॉइंट्स होती है दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट. यहाँ पे मूवमेंट अलाउड ही नहीं होता. कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में मूवमेंट अलाउड होता है बट ओनली लिमिटेड. मोरोवर साइनोवियल जॉइंट्स को साइनोवियल इसलिए नाम दिया गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी. सो क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट आंसर बताना है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से बी है. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.